Yes, good evening everyone. Welcome to Lukmaan IAS. This is DTRS session, Daily Takkar Rapid Series, and this is class 97 of today's, we can say this particular MCQ lecture series, and today's lead topic is Species in News, Okapi. So today is celebrated as World Okapi Day to spread awareness about this particular species. We will try to understand more information and solve MCQ based first MCQ on this particular species, and thereafter 9 different MCQs based on 9 different topics. Okay, so tomorrow we are going to start with the geography module for general studies part, GS1 part of your mains, and also part of prelims examination. So there will be 40 sessions covering comprehensive syllabus of your prelims as well as mains examination, and along with that first 2 sessions are open and free to all, so they can all of you can attend all these sessions, first 2 sessions at morning 11 o'clock. It is available offline as well as online. ठीक है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है आप यूट्यूब पे जो लिंक है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस सेशंस देन यू कैन थिंक अबाउट लेट्स से ज्वाइनिंग द पर्टिकुलर मॉड्यूल. पहले सेशन में हम इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे और मैं पूरा कोर्स कैसे हम प्रोसीड करने वाले उसके बारे में बताऊंगा, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द सेशन syllabus itself. The uniqueness of this particular course is focus on conceptual clarity. Like out of 40 sessions, 20 sessions, almost 20 sessions have been allocated for geomorphology, climatology and oceanography, so which involves largely the concepts. Okay, and the remaining classes for Indian geography and we can say human and economic geography. So there will be special sessions for mapping section, world mapping and India mapping. Along with that, 3 integrated class tests for prelims and mains with the updated pattern of UPSC examination. So this is going to help those students who feel that still their geography preparation is weak. Okay, they can think of joining this module. Fine. So today's quotation, which is helping us prepare for our mains examination, essay and ethics paper. Okay, so quotation is saying that my humanity is bound up in yours, for we can only be human together. Okay, so very relevant, especially the kind of conflicts that we are witnessing all over the world. Okay, so humanity. What is humanity? Simply it is, we can say, whenever there is expression of human values, when people interact with each other, expression of human values, that is humanity. Like simply when the person is let's say facing some problem and you are helping that person, so you are showing empathy, you are showing compassion, expression of human values, we can say it is humanity. So ठीक है, तो destitute person, you are helping the destitute person, so we can say simply it is humanity, right? So expression of human values, some examples of human values like care, compassion, empathy, love, respect, dignity, truth. We can say all these are human values, right? Now what quotation is saying, my humanity is bound up in yours. Why he is saying like this? That I will behave in a human manner when you will also behave in a human manner. So to some extent it is true. Why? Because we are social animal, and in social animal there will be some interactions, people to people interaction, and the people will expect in return the way you are behaving. ऐसा होता है ना? ठीक है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप किसी को मदद करते हैं तो आप इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ सोशल रिलेशंस वर्क्स एक्चुअली. ठीक है, सो ही इज सेइंग दैट माय ह्यूमैनिटी, मतलब आप भी अगर ह्यूमन ट्रीट करते हैं मुझे तो मैं भी आपको ह्यूमन ट्रीट करूंगा बेसिकली. ओके, सो largely the social contract, or we can say that the
people in the society, groups in the society, they behave in this manner. But I told you it is to some extent, right? ठीक है, to some extent. Why? See, it is not always bound that human will always seek in return the similar behavior. ठीक है, human values are not having any kind of terms and conditions. ठीक है, आपको जो अर्ज होता है, समझो कोई एक पर्सन है जो समझो डेस्टिट्यूट पर्सन है, या फिर सम पर्सन इज फेसिंग इंजुरी और एक्सीडेंट, सडनली यू फील अर्ज ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन. दैट अर्ज इज नॉट बाउंड बाय एनी टर्म एंड कंडीशन. इन रिटर्न मुझे कुछ पैसा मिलेगा, हेल्प मिलेगी, और लेट्स से अप्रिशिएशन मिलेगा, नहीं. राइट, सो दैट मीन्स ह्यूमन वैल्यूज आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग, and expression of those human values is not bound for certain kind of gratification or appreciation or return materialistic benefits. Okay, or even for, we can say, tit for tat kind of thing. ठीक है, so we can say that human values are not dependent on how the other people behave, rather simply they are expressed irrespective of other people. ठीक है, जब हम सोचते हैं कि दूसरा भी सेम तरीके से बिहेव करे, दैट मीन्स वी आर कीपिंग एंड्स इन आवर माइंड व्हाइल टेकिंग एक्शंस. मीन्स एंड एंड्स वाला रिलेशन आता है ना, टेलियोलॉजिकल, राइट? सो बट इज इट ट्रू ऑलवेज? नो. कांट विल से ह्यूमन एक्शन शुड बी एंड इन देमसेल्व्स. तो यानी कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो करो, और उसके बेनिफिट्स या जो एंड के उसका आपको, तो यस, भगवत गीता विल ऑल्सो से कर्म करते रहो, फल की चिंता मत रहो, चिंता मत करो. बेसिकली इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, लिमिटेड एक्सटेंट. ये जो कोटेशन है, तो आप जब एक्सप्लेन करोगे ना एथिक्स में, ऐसे में, तो आपको काउंटर थेसिस लिखने आना चाहिए ना, दोनों साइड से आर्गुमेंट लिखने आना चाहिए. So this particular argument is true here. Fine. And I was telling you relevance. So relevance in terms of present day society. So whatever the conflicts we are facing, be it caste, communal conflict, or even neighbor conflict. ठीक है, तो नेबर में भी देखते हैं आप कि आप हेल्प करेगा, मैं करूंगा तो ही ठीक से रहोगे. कॉर्डियल रिलेशंस कब होते हैं नेबर के? जब एक दूसरे को वो समझ के हेल्प करता है जब भी जरूरत है तभी. अगर एक दूसरे को यूज करता है और इन रिटर्न नहीं करता है, तो फिर वो है ना. सेम इज कंट्रीज, नेशंस. सो द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, तो बेसिकली ह्यूमैनिटी, नो. सो if the other is showing humanity, then I will show humanity. This is what happening all over the world. ठीक है, you come forward for peace, then we will come forward for peace. ठीक है, इस तरीके से चल रहा है ना. For that context it is true, but ultimately जो काउंटर थेसिस जो हमने बोला ना, तो यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमनिज्म, गांधी जी, टैगोर, बुद्धा, वो सब चीजें जो है इसको ओवरकम करते हैं. Fine. Okay. Let's talk about now today's questions. All right. Okay, these are today's 10 topics. Let's solve these questions one by one. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Okay, Okapi animal species. This is very unique and it is endemic to Democratic Republic of Congo, Africa, Central Africa. The rainforest of Africa, we can say, and it is unique elusive species that lives in rainforest of Central Africa. This is true. Why unique and elusive? Because yes, it is having long necks and legs similar to giraffes, but they are not similar to, we can say, in terms of size. ठीक है, they look like zebra because they have strips on their body and legs. ठीक है, तो ये जो legs है उन पे strips होता है.
बट जिराफ के इतना लंबा उनका ये नहीं होता, लॉन्ग नेक थोड़ा सा होता है बट नॉट सो साइज के हिसाब से वो जेब्रा की तरह दिखता है, बट फीचर जो है वो जिराफ की तरह है. ओके, सो दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. Male and female both have same horns. Now this is also not true. Male is having small horns. Female जो है वो नहीं होता है, suppressed होता है. ठीक है. Then it is listed as critically endangered. Only endangered. Now why we are asking this? Because UPSC is focusing on species based questions. है ना. स्पीसीज पिछले साल 3-4 क्वेश्चन स्पीसीज बेस्ड आए थे बहुत ही, और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज. ओके, सो दिस इज आल्सो यूनिक, एंडेमिक, फाउंड इन सर्टेन रीजन. आल्सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करता है जो ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होता है. अगेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन के लिए. ओके, देन दे हैव फर ऑन देयर बॉडी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लेट्स से मॉइस्चर, एज दे आर लिविंग इन इक्वेटोरियल मॉइस्ट वी कैन से क्लाइमेटिक रीजन. ठीक है, तो फर जनरली कौन से एनिमल्स में होता है, जो पोलर रीजन में होता है, हायर लैटिट्यूड में, बट इसमें फर है बॉडी पे, बट इसका फंक्शन कुछ और है. उसका फंक्शन क्या है, ठंडी से बचाना, बट इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट लेट्स से इरिटेशन और समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर दैट इज देयर, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये यूनिक है. ओके फाइन. सो दिस वन ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस. ठीक है, फाइन. लुक्स लाइक दिस. देखिए लेग्स के ऊपर जेब्रा की तरह. हाँ, वन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज हैविंग वेरी लॉन्ग टंग. ठीक है, वेरी लॉन्ग टंग. सो दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग लॉन्ग नेक लाइक जिराफ, बट ड्यू टू लॉन्ग टंग दे कैन एक्सटेंड दैट टंग एंड ईट लीव्स फ्रॉम द ट्रीज. इस तरीके से वो यूनिक कैरेक्टर फीचर जो है वो डेवलप हुआ है उनका स्पेसीज में. ठीक है. ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, वन केस सुप्रीम कोर्ट. हाँ ठीक है. सो रूल्स अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ substantial fetal abnormalities for only up to 24 weeks of gestation period. Rather, only when there are substantial fetal abnormalities, it is allowed beyond 24 weeks and that too up to 28 weeks. ठीक है. So अगर fetal abnormalities है and अगर मदर के हेल्थ लाइफ के लिए थ्रेट है, तो ये दो केसेस है. This is incorrect. The rules and are now applicable to transgenders, queers and other genders, diverse identity who do not identify as women. Rather, there is specifically mentioned that those who are not identifying as women, it is not applied to them. Okay, gender aspect. So this is incorrect. The amendment to MTP in 2020 decriminalizes abortion within the specified. Still, in India, abortion is a criminal offense. ठीक है, तो वो डीक्रिमिनलाइज नहीं करता है. रादर दिस प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस. ठीक है. सो वी कैन से दिस इज आल्सो इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, फाइन. दिस इज वेरी यूनिक. Some planets produce singing plasma waves. First statement. The ionosphere of those planets interact with solar wind to produce the wave resonance. So, is it correct? First one is correct, but whether it is explaining, the second statement is explaining that. देखिए लॉजिक पर यूज करने आना चाहिए ना. Ionosphere is having charged particles. How it can have interaction with solar winds? That means basically it is saying magnetosphere.
magnetosphere of planet interacts with solar winds to create some kind of resonance, and due to that resonance some whistling sound is emitting. ठीक है, अब वो astronomers ने record किया है actually. This is called as singing plasma waves. ठीक है, तो ये ionosphere नहीं है, it is magnetosphere. This is incorrect, this is correct, so answer will become C. ठीक है, okay. Okay, this particular summit happened recently, Global Maritime India Summit in Mumbai. So this is actually the third edition of the summit, and this is not the first edition to be held physically. First edition was held physically in Mumbai itself in 2016. Second edition was held in a virtual format in 2021, and now it is third edition. So that means it is happening second time in a physical manner. ये incorrect है. Specifically focuses on augmenting only economic maritime potential of India, while dialogues on maritime safety and security addresses through other multilateral platforms. So you should know it is having very wide mandate, okay, or the subject area it discusses, this particular summit. This includes maritime safety, security also, like issues of piracy and other aspects. ठीक है, so it not only focuses on blue economy but also maritime security. So this is incorrect. Again we can say that neither one nor two. So Amrit Kal 2047 was also inaugurated or unveiled in this particular summit itself, related to blue economy. We have framed separate MCQ based on that. Yes. Now, what should be answer to this one? Amrit Kal Vision 2047. It is a blueprint for a green economy outlining strategic initiatives to promote sustainable practices. It is blue economy, right? Suppose student has not read about it, तो उसको लगेगा हाँ हो सकता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट भी देखिए, इट इज अंडर एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसको लगेगा ग्रीन इकोनॉमी और वो सेम है, right? But both are incorrect here. Niti Aayog is responsible for now implementation of this particular, yes, vision. ठीक है, it is related to blue economy. Fine. So both are, again D is the correct answer here. Okay. Yes. Very good, Vijay. Now let's solve this one. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Recently there was verdict related to same-sex marriage, and the Supreme Court with majority of 3-2 has basically denied the status under Special Marriage Act. ठीक है, so you should remember know the developments. ठीक है, Supreme Court has legalized same-sex marriage under provisions of, incorrect है ना, right? It has denied, it has not legalized. In 2018, Supreme Court decriminalized homosexuality by striking off some parts of Section 377. That is true. ठीक है, second part is true. First one is incorrect. See, whether the Supreme Court decision is correct or not, that is the analytical aspect, and that should be discussed from mains perspective. Society part, GS1 society part, GS2 social justice part, ethics part. तो उस एंगल से आपने सोचना चाहिए वो, ठीक है. So there may be separate ED lecture. Again, in past we have discussed this in ED lecture, this particular topic. ठीक है, B is the correct answer here. Yes. Consider the following statement about ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. It is a non-profit organization that conducts agriculture research and development in Asia and Sub-Saharan Africa with wide array of partners throughout the world. Yes, this is true. Non-profit organization है ये ICRISAT. It is a research institute. Okay. It is headquartered in Jaipur, Rajasthan. This is incorrect. कहाँ पर है ये? नियर हैदराबाद, तेलंगाना, हेडक्वार्टर. हमें लग सकता है कि सेमी एरिड है, तो हमारे भी एरिड सेमी एरिड रीजन में होगा.
ठीक है, सी मैंने बोला था लॉजिक यूज करना है, तो इतना भी क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लॉजिक नहीं यूज करना है, ठीक है. सो इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, सो वी कैन से इट इज इनकरेक्ट. दिस वन इज करेक्ट. फाइन. ओके. What about this one? Millets, a group of highly versatile nutrition rich in protein, fiber, essential vitamins. This is very generic statement. We can accept this as true. What about second one? Millets are rabi crops. They are kharif crops. अगर यहाँ पे लॉजिक लगाना है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे मैंने बताया था ना कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रिस्क लेनी है. कॉन्सेप्ट बेस्ड, हाउ यू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट. Generally in India, rain-fed crops are kharif crops, because during winter we don't have as such rainfall. No, rain-fed crops. Most of the millets are, we can say, rain-fed crops. ठीक है, जो हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप्स है पहले से, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज और इससे पहले से हम ले रहे हैं. ठीक है, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी. सो वी कैन से दैट दे आर द खरीफ क्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. तो वो लॉजिक यूज करिए ना, मेरा अंडरस्टैंडिंग है वहां से. ठीक है, रेन फेड इंडिया में कौन सा होगा, कुछ टाइम पे सीजन में होगा, तो वहां से मैं वो लॉजिक जरूर यूज कर सकता हूँ. ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मिलेट्स, यस, it was found even in the civilization, and the domestication of crops, we can say, happened during that time in ancient India. This is correct. Only 2, B is the correct answer. Sir, millets are only kharif crops. We can say largely. So due to availability of irrigation facilities, now it is grown in Rabi season also. Especially in southern India, we don't have such seasonal, let's say, classification, no, because it's tropical region, so climate or temperatures are warmer, so it can be grown even in Rabi season, especially in southern states. ठीक है, but crops as such when we classify, it is kharif crop. ठीक है. Okay, regarding rice, basmati rice, India, China are the only growers of basmati rice. Pakistan, India and Pakistan, they grow basmati rice. India is the second biggest rice exporter. At present, it is first biggest or largest, first one. ठीक है, so this is incorrect. This is incorrect. Basmati varieties of rice are widely consumed in India. Can you imagine everyone is eating basmati rice? No, very few people, privileged people, they are eating. We also sometimes go in a restaurant and then only we have that pulao and all biryani things and all basmati rice. ठीक है, रोज के खाने में बासमती राइस बनता है क्या हमारे? नहीं ना, तो वाइडली कंज्यूम कैसे हो सकता है? ठीक है, largely basmati rice is exported from India. Instead of consumption, it is exported largely. ठीक है. In production, it is first. Rice production. ठीक है, 2 साल पहले हमने ओवरकम किया चाइना को. ठीक है, एक्सपोर्ट्स नहीं, इंडिया में ही कंजम्पशन इतना होता है, तो एक्सपोर्ट्स के कैसे लीडिंग होगा? ठीक है. Yes, this was in news. Advanced traffic management system. It is being implemented across the roads in metro cities. See, this particular system is being implemented to have the human-less presence or monitoring, we can say monitoring and implementation of rules related to highways, traffic in highways. कोई भी गलत कोई चीज करता है, रूल्स तोड़ता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पीड गन्स, या फिर जो मशीन्स लगाए रहते हैं स्पीड चेकिंग के लिए, सीसीटीवी लगाए रहते हैं एक्सीडेंट को चेक करने के लिए कि किसकी गलती थी. तो हर 10 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे पे सीसीटीवीज इंस्टॉल किए गए हैं, कैमराज, एंड वी कैन से स्पीड चेक के लिए एक्सप्रेसवेज पे. सो दिस इज बीइंग डन अंडर दिस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो हर जगह पे वो चौकी तो नहीं रख सकता ना, ट्रैफिक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं हो सकता वहां पे. तो बेसिकली इट इज
एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवेज पे हो रहा है। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स नहीं है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया is implementing agency, and it also play active role in disaster management by providing inputs for effective planning and implementation. Yes, emergency situation में it can help. ठीक है, so this is true, but first two are incorrect, only one A is the correct answer. ठीक है, okay, fine. Okay then, let us stop. Fine, thank you.